एक सेकंड शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म ज्योति दीपो हर्तु मे पाप संध्यादि नमोस्तुते ज्योतिषां प्रभु आरोग्यम देहि पुत्रांस सर्वकामांस देहि मे. हाँ परफेक्ट. હું રસોડામાં મૂક્યો શ્લોક બેટા આ રસોડામાં મૂક્યો ને બેટા હવે નહીં તો એકદમ આગળ ભગવાનના રૂમમાં મૂક્યો બેટા ઠાકોરજીના રૂમમાં અને ફેન ફાસ્ટ આનો છે ને એક આર્ટિકલ વાંચેલો કે અગરબત્તી છે ને ઇઝ નોટ ગુડ ફોર યોર લંગ્સ એનો ના હવે વાંધો નહીં અહીંયા ઢાંકી દીધું છે ને એટલે ઉલવાશે ને. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी. जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी. जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. जय श्री राम. By the immense grace of Bhagwan, we have this Sunderkand today, the first Shanivar of Shravan Mas. Right? So I always say we only look based on the dates, and Bhagwan makes it happen with the tithi. So for example, we just talked that Devan's birthday is 25th January. That happens to be Saturday. So we are planning that 2025 on Saturday 25th January. We may be surprised, that might be a pradosh or whatever, tithi wise will be a very auspicious thing. As such, it says the moment you say Bhagwan's name, that tithi becomes the auspicious tithi. But still, Shravan Mas is a mass of bhakti. Anybody know why Shravan Mas is so much importance and why puja of Lord Shiva? Mahashivratri is in March. Generally February or March. Anybody know why? No. There are a lot of reasons. In Ramayana it says Bhagwan, when Lord incarnates, there is not one reason. It can be infinite reasons. So similarly, all this auspicious thing has multiple reasons. One of the reasons, there are a lot of reasons, but one of the reasons, first I'll say who other people have said it, and then I'll say what I think is the reason. Okay. So other people have said it. Shravan Mas is generally we have a monsoon. So Varsha Rutu. And it is said Bhagwan, Vishnu Bhagwan is Alankara Priya. He likes Alankar. Bhagwan, Krishna Bhagwan ne Alankar kare. Shankar Bhagwan, Vishnu Sangha Alankar. Shankar Bhagwan is Abhishek Priya. Bhagwan no Abhishek, Shankar Bhagwan no Abhishek Nitya થાય. Right? So monsoon માં વરુણ દેવ શંકર ભગવાનનો અભિષેક કરે છે. કેમ? રુદ્રમમાં આવે છે એક શ્લોક આવે છે રુદ્રમમાં, જે આ સોમવાર આપણે કરવાના છે એમાં, કે શંકર ભગવાનનું સ્વરૂપ શું છે કે છેક આકાશથી પાતાળ સુધી આખું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે તો બ્રહ્મા જ્યારે શંકર ભગવાનને માપવા ગયા અને પાતાળ ગયા અને આકાશ ગયા તો બી એમને અંત ના દેખાયો, જે અનાદિ અનંત જેનો અંત નથી. So then it says that he sort of lied, and that's why there is no Brahma's Mandir in India anywhere. So
Shravan Mas is because Varun Dev himself is doing Abhishek of Lord Shiva. Now that is what people have said. What I say is, when you read the Valmiki Ramayana, when you read the Tulsi Ramayana, and tomorrow is Tulsi Jayanti India ma, it's today already because it's date change. And Kushan bhai, they had already sent me a text this morning about Tulsi Jayanti. So tomorrow. So India ma, it's already started. So he sent the text already in the morning. So when you read this, Sugriv, Hanumanji met Ramchandra Bhagwan in a Shravana Mas. Hanumanji met Ramchandra Bhagwan in Shravana Mas. How do I know? It says in Valmiki Ramayana. It says with the name Shravana Mas. So Hanumanji met. Now Hanumanji is, that's it. For him it's a most joyous occasion to meet Ramchandra Bhagwan. And in Shravan Mas we have a Krishna Bhagwan Janmadin, Avtaran Din, right? Janmashtami. So Shankar Bhagwan actually went to Nandagaon and to do the darshan of Krishna Bhagwan, Bal Krishna, right? He did the same thing for Ramchandra Bhagwan also. So Shankar Bhagwan's Ishtadev is Vishnu. Now, Vishnu Bhagwan says, Mara Ishtadev Shankar se. Because that is how they see it. You know, it is in us that waste and all these things, not for the God. And this is our way of thinking. So, in Shravan Mas, Shankar Bhagwan, and in the Agyarva Rudra, Hanumanji Dada is very happy because એમના જીવનની મનોકામના શ્રાવણ માસમાં પૂરી થઈ છે. એમને એમના ઈષ્ટદેવના દર્શન શ્રાવણ માસમાં કર્યા. બંને સમયે રામચંદ્ર ભગવાન વખતે અને કૃષ્ણ જન્મ. રામચંદ્ર ભગવાનનો જન્મ રામનવમી પર થયો, પણ હનુમાનજી દાદા અને રામચંદ્ર ભગવાન શ્રાવણ માસમાં મળ્યા. જ્યારે વનમાસમાં આવ્યા ત્યારે સુગ્રીવને ઇવન કહે છે ભગવાન કે મૈત્રતા કરાવે છે. દેન હી સેઝ કે શ્રાવણ માસ છે, મોન્સૂન સિઝન છે ને Shravan શબ્દ વાપર્યો છે. So let's take some time. Sugriv's coronation has happened. Now we will start and so you do the administration of your new kingdom, and then sometime later start the search of Sita Mata. And the another reason is that Hanumanji met Ramchandra Bhagwan. Sugriv also met Ramchandra Bhagwan. And for us, we are like Sugriv. Why? Because Sugriv is the one who doubts Ramchandra Bhagwan, the strength of Ramchandra Bhagwan. And all of us, at one point or another point, we may have doubted. Something happens. Oh, Bhagwan, how karyu? We don't realize it. How karyu itla mate? This was the most important, most good thing for us. That's why he did it. But we don't see it that way. So Sugriv is like us, or we are like Sugriv. It's shown as that way. How do we know that Sugriv doubted Ramchandra Bhagwan? Valmiki Ramayana says that. Tulsi Ramayana also says when mitrata happens, the friendship in the front of Agni, the witness of the Agni is witnessing, and then he shows. Ramchandra Bhagwan says that you go and fight with Vali and take your kingdom back. So Sugriv says, no, Ramchandra Bhagwan, Vali is Mahabali. He explains how much strength he has. And then he shows, there was one Rakshas, he had died in that Rishimukh Parvat. So his asti was there. Bones were there, and it was a huge mountain because that was a monstrous monster, right? So the bones were there, and Sugriv shows those bones to Ramchandra Bhagwan and says that Vali killed this Rakshas. That much strength he has. So he does that. So what Bhagwan does is
પાદાંગુસ્તેન ચિક્ષેપ સંપૂર્ણ 10 યોજન. પાદાંગુસ્તેન પગના અંગૂઠાથી આમ કેરમનું સ્ટ્રાઇક કરે ને હાથથી એવું અમને પગના અંગૂઠાથી કર્યું. આમ કરી અને 10 યોજન એને એ માઉન્ટેનને ફેંકી દીધું. Now people may say, is this all true? If you don't take literal, that's okay. Take it in poetic sense. Take it in poetic sense. He is describing somebody's strength. We normally it says, oh, such and such is millionaire. Do we went and check his bank account? He's 1 million, 2 million, 10 million, 100 million. We don't know, right? So we say millionaire. What we mean is he's a wealthy person, right? In a sansarik way, That's another thing. Who is wealthy is totally different in a adhyatmic way, but that's separate subject. So he shows that, and Bhagwan does this thing, Padangustena Chipsheta Sampurna Das Yojanam. And that is why we do Shravana Mas Shankar Bhagwan's puja. Because Shankar Bhagwan he's a Shipra Prasadan. Shipra Prasadan means he is the Ashutosh. That is his name. These names are given by his gunas, by character. Not that, these names are given just out of vacuum, out of context. So Asutosh means the one who gets pleased with just one small prayer. You don't need an elaborate prayer to pray, please Lord Ashutosh. That is what the meaning of Ashutosh. Kshipra Prasadam. Kshipra means short. Prasadam meaning in the short efforts he gets pleased. So this is the month, Shravana Mas is the month. Lot of people will say, today what is happening is that in the name of Katha, lot of business is going on. Stay away from that. Read on your own. These Gita Press books are 100 rupees, 200 rupees, 10 rupees. Read on your own. You will see the difference. You will see the difference. So this is the mass of the Shankar Bhagavan. And this is the question. If he is a Kshipra Prasad, Asutosh, why Ravan had to offer, thus he offered his head 10 times. Again, same thing. Don't go literal. We are not talking he literally cut his head and offered. Okay? Think of it. He put a lot of effort to please Lord Shiva. Why? Because Lord Shiva knew that this guy is arrogant and he will misuse the power. So it took Lord Shiva for Ravan to offer so many prayers, and finally Bhagwan gave him the boon. And you know why he gave him the boon after the 10 head? You know that? 10 head? 10 માથા આપી દીધા. 10 રુદ્ર સુધી એને માફ કરે. 11મા રુદ્રએ માફ ના કરે. એ હનુમાનજી શંકર ભગવાને વિચાર્યું કે મારા 11 રુદ્ર અવતાર છે, 11મા રુદ્ર અવતારે એનું અભિમાન તોડ્યું. સો 10માં એ ખુશ થઈને આપી દીધું. પ્રયોજન, ભગવાનના પ્રયોજન, the plan is always perfect. So think with that, this is a beautiful mass. Pray with utmost devotion, with your best desires, it will be fulfilled. And especially in this Pavitra home, and I always say, this is not the Yajman Stuti. Where it needs to be said, it needs to be said. This is a very auspicious home. Brahma, Vishnu, Mahesh, 3 Yagnopavit happened recently, right? Yeah. We did a 52 Bhavan Datta Bhavani here in order to make the most auspicious occasion for this brahmacharis. Look what happened. The last Yagnopavit happened. The day happened, people went 2-3 hours, and the Vavajodu started. Yes. The next day, a lot of people lost the roof, the fences, and all these things. 1 weekend here or 1 weekend there could have been at this thing. Yeah. This is what it proves. When we did it, we said, and nobody thought, she herself said, I want to do Datta Bhavani, right? So Datta Bhavani and Yagnopavit, it's not like, connected or something. We do generally Sunderkand. Any puja. Yeah. But Datta Bhavani, who is Datta? Brahma, Vishnu, Mahesh. And whose janam happened? 3 batuks. It was not 5 batuks, 4 batuks or so. None of this thing was planned. We didn't say, oh, you do this or you do that. We normally don't even talk, right?
So Shraddhavan Labit. 27th July last year, Dayaji's Janam Diyas, we did a Sunderkand on a Samudra, on the ocean. That is what this Sunderkand is all about. At the ocean, they are just coming at that. So last 27th. This 27th July on Saturday, we did a Sunderkand in Sunnyvale Temple in California. It doesn't happen that way on that day. Last year, 27th of May, we did a Sunderkand in Gayatri Mandir. That 27th May, that exactly 1 year, date-wise, exactly 1 year, my dad left his mortal world. Exact that day, 27th. Chicago, they were planning for 4 years. When Chiom was there for 4 years. Never happened. It happened only on May 27th, after the 4th year. And the 26th was Chiom's graduation, medical college graduation. 27th Sunderkand happened. 28th we started to go California, starting traveling. So Shraddhavan Labit, when you have a Shraddha, so this is the, and since it is a Tulsi Jayanti, it would be remiss if I don't say this thing. This is a Vinay Patrika. This is the last pustak or Rachna Tulsidas ji did. Vinay means politeness, Patrika meaning the invitations or request. So he sent this request to Lord Ramchandra Bhagwan, and he put lot of Divya Pada and lot of Divya Bhajans, unbelievable bhajans. So, and when I say this, ₹35, 35 rupees, Gita Press. Get this. If we don't get it, we'll lose our culture, not in the way that people is portraying. Why I'm saying this is, Tulsidas is tomorrow is his Jayanti. We started Sunderkand Pathsala on Tulsi Dasji's Punya Tithi. Tomorrow is Jayanti. We started it on Punya Tithi just couple weeks back for young kids from age 7 to 12. And first class went very well. We are not only mothers of the students come. We're not inviting any other adults. It's not for other purpose. Only strictly for Sunderkand Pathsala, meaning for young kids. One, they did it very well. The next class is on Tuesday 22nd or Wednesday 22nd, somewhere around that, August. It's in a Pearland. It's on one of the students' students' home. And right now we have about 8 or 9 students in the in person, and that day 10 or 12 students join through the YouTube. And in that there is no further discussion. It is meant for recitation, and again that happened on its own. It happened that these are all so far. It's welcome to everybody. So by means all the kids and everybody. It so happened that one of the kid happens to be a Telugu. His mom, one was Tamil. They wanted to learn, so they asked us. There is one Telugu. So far is all non-Gujarati and non-Hindi speaking, and they want to learn Tulsidas Sunderkand. And they, so they say like this Sunderkand, right? We thought, okay, they said it, unless they have an interest, we don't want to push it. Because people might say, this is what you want to do, you want to bore people with these things, whatever nonsense they want to say. So we just didn't want to push them. So because right after this Sunderkand, a lot of people say a lot of things, right? And the interest fades or desire fades. They want to do something else, right? So that's fine. So over here, they called and followed and said we want to do it. So we said fine, and it happened that when they contacted, and again I'm saying everybody looks the convenience according to the date. We just talked about pushing by 25th January, Saturday. It's a Saturday, so we say it's a Saturday. So we'll do Devans, but this is on that day itself.
So I was saying that when you go back and look the tithi, it might be a auspicious tithi of Pradosh or something incredible day, we will see. So when we did this date, and as I was about to start that Sunderkand, that Pathshala, that's where I got the message that today is Tulsidas's Punya Tithi. Just as we were starting. You cannot see, people can, not in a bad way, people can shrug it off, but even people, MD, this guy is MD, Deepak Chopra, he wrote a book, The Power of Coincidences. Google and you will find, he wrote a book, Power of Coincidences. So even scientific, those who have education in science, they also believe in some of these things. So it happened, it went well. So now the next class is this. If anybody wants to join, obviously, only thing is because it's sometime weekdays and we live in Pearland, most of the kids are from Pearland. So we want them to learn, and our goal is that if everything goes well, that November we have a Akhand Ramayana at our home. So Thanksgiving. So on that day, as a part of Akhand Ramayana, the Sunderkand will come as a part of that Ramayana. That comes on the next day. Friday will start at 6 p.m. Generally that Sunderkand comes around 9 a.m. So our goal is that if they have done well by then, they will recite on that day, that Sunderkand. So they will have the forum and encouragement, and they should deserve that. And if it takes a little longer, then hopefully with Bhagwan's grace, we'll have them come here and chant the Sunderkand on your Akhand Ramayana in June in 2025. So with that, and so reason I said why Tulsidas, why I'm saying this book. In Tulsi Ramayana, I said many times that he is so clever, he has used like one line and described so many things. So I've said many times this, Chauda Bhuvan Pati Hui. I said many times, the Chauda Bhuvan, 14 worlds, one master. That's described in Bhagavad several times. Recently I was reading Bhagavad, and then it connected in Sunderkand, and you will see in a minute when we start, not in a minute, it will take a while. Just a minute ago I said that Manji Dada will go and teach a lesson to Ravan. There, Hanumanji Dada does the what is that? Maruta Chale Uncha. Where is that? Look at it. So anyway, in Sunderkand, Tulsidas ji says, Maruta Chale Unchas. Marut. In Sunderkand, you will see somewhere it's in when the Bhagwan is going from one place to another place of the Ravan's Lanka with his tail burned. So at that time he says, because of so when there is a lot of wind and if there is a fire, the fire catches further, right? So that's why he's saying Maruta Chale Unchas. Unchas means 49. Marut means Pavan. Marut, that is the loose translation. Marut Chale Unchas. So 49 types of wind was going on in Lanka at that time. 49. That's what he says. Why 49? 49 types of wind. Wow. Why exactly 49? Why exactly 49? And he said in one small sentence, why 49? In Bhagavad, in the 6th canto, Sastam Skanda, Chatta Skandma, I think last 2 chapters, one chapter is completely devoted to Aditi's son. Aditi is a mother of Devas, Aditi is mother of Asuras. That is why one of the son of Aditi is Surya Narayan Bhagwan. That's why we call Aditi. So Aditi's
So it so happened that Bhagavad describes the birth of 49 Maruts. 49, Bhagavad describes exactly why 49. It's a little bit, it's a one chapter, so it's a little bit long, but I just wanted to point out the enormous cleverness, the intelligence of these sages and sadhus. Don't laugh it, and don't allow people to demean this thing, and don't allow people to make fun of these things in Katha and other places. Honestly, I'm saying, read on your own, you will understand. If you read Bhagavad on your own, and then you read something else, you will understand. So, with that, no. You know, the thing is કે આપણો અહીંયાનું સાયન્સ હજુ આપણે આટલા પ્રકારના પવન ને આટલા પ્રકારના ફાયર ને અહીંયાના સાયન્સ હજુ બધું નથી એમ કે ડિસ્કવર કર્યું. આપણે કેટલી જાતના એમ કે આ જાતના અગ્નિ બી કેટલી જાતના પ્રકારના હોય છે, વાયુ બી કેટલી જાતના પ્રકારના હોય છે. તમે વિચારો સાયન્સ કેવું હશે? That is true. In that context, Marut, although they born from Diti, they were ferocious. Okay, so Pavan is what? When the what happened that right after that Yagnopad, one day I'm talking, we lost the fence and roof and all this, the ferocious wind, right? And it's category 1, 2, 3, 4, 5, right? So it's all ferocious winds, absolutely correct. So it says even though they were ferocious, and the chapter goes on and describe why they turned into the devas, so they were blessed. So they turn into the devas, and the belief is that their ferocious or the ferocity they use to punish the bad deeds, kukarma. So yes, now one of the problem is there is two problems going on. One is everything Indian, everything our culture is useless, it's andhashraddha. That is one problem. The second problem is everything Indian, everything our Vedic thing is all great and all scientific. That is also not. It's somewhere true because what we have, because we have lost so much. Now, if I had not read the Bhagavad and Marut Chale Unchas, so you would have, we could have just read it mechanically 100 times, Marut Chale Unchas, Marut Chale Unchas. We would have never thought, why Marut Chale Unchas? Why he said that? You go in Bhagavad and you read that, and you see it's 49 and how it happened 49 and all these things. So it is a, so it's a, and if nothing else, I always say these things. If you allow your kids to read this as a literature, read this as a literature. Even if you don't have a Shraddha at this point, that's okay. Read it as a literature. At some point you will achieve that, and at least you will understand. Otherwise what will happen is that we would have no idea, because Valmiki wrote 24,000 slokas of Ramayana. Tulsidas ji condensed that into this simple Hindi bhasha, Avdi bhasha, and we can do that Sunderkand in 2 hours. Valmiki Ramayana takes Sunderkand 8 to 9 hours to do it, and that is in Sanskrit. So not many people can do it. At least Hindi we can read it, right? If we don't do that, we will lose the Hindi, and ultimately, so and Bhushan Bhai's dad also sent me one message last week. Some Vaishnav sadhu, Vaishnav Goswami was talking about how the Hanuman Chalisa came from Tulsidas ji, that famous story of Akbar prisoning him and like this thing. That's why he may have said that Chute Bandi Mahasukh Hoi. So he said all these things. That could be true. But you know what he did? That group Swami, Vaishnav Swami, he cited two Western authors. One he said Oxford author and another American author. And it so happened that uncle sent me this. That author, he is a professor in University of Iowa. It so happened he wrote a book called Hanuman's Tale. He is a professor in University of Iowa.
He's in a Asian studies or Asian culture studies department. So he has some interest. He had gone to India many times. And he has collected so many stories, folk stories. He had went to Varanasi, talked to sadhus and all these things. And he has some Shraddha, but he has kept it his inquisitive mind and his inquiry, because he's a professor. In order to become professor, you have to do PhD. PhD, you have to do thesis. In thesis, you have to do some research, be it medical or science or literature. So research requires asking questions, right? So he has asked that question. He wrote this book. Uncle sent me that. This Goswami, our Gujarati Goswami, I'm talking Indra Beti ji lineage or whatever. He says, our Vaishnava Sampradaya, he says that he gives his name. You know what? That Hanuman's Tale book. So I just mentioned on 27th July, Dayaji's birthday, we did a Sunderkand in Sunderkand temple. Shivam and Dayaji. So we went Friday, we did Sunderkand. Sunday morning we flew back. We only went for that. So Friday, Shivam also was coming back from his vacation. He shortened his vacation because we said we are coming. So he was coming. So he came to San Francisco airport. We landed Oakland airport. So we made close to his home. And then we went to his apartment for about an hour. He had a meeting. And our check-in in the hotel was around 3 p.m. for Friday evening. So we went to his apartment. And in his apartment, to our surprise, he had a book, this Hanuman Tale, that the University of Iowa professor. So he was reading that book. So from his apartment, after his meeting was over, from there to the hotel, we were going the entire way. He little bit narrated what he has read so far. And that book is so enormous. And it's in English, obviously. So he's reading that book. He wrote a fantastic book, Hanuman's Tale. And some of the things he has written in that is you will not find anywhere, because he has found so many things. He said Tulsidas ji even created, we do Chalisa. Tulsidas ji created Satika. So 60, Chalisa means 40 chopais, Satika means 60 chopais. So he has created another 60 chopais or Satika, Hanuman's Satika. He said hardly anybody knows that. Hardly anybody knows that. I mean, obviously, I didn't knew that. All along we've been doing this thing. Luckily, he read it, he searched it, and he was playing that on the CarPlay, YouTube or something. And we know these things, and this is what we play. Tulsidas ji also wrote Vinay Patrika, Tulsi Ramayana, Parvati Mangal, Sita Mangal. These are Mangal means he describes the Sita Mata's Vivah in Ramayana. He describes Shankar Bhagwan's Vivah in Ramayana, Shankar Bhagwan and Parvati. But because it's a long text, he kept it short. But he has a desire to describe it more, so he kept it separate. So he wrote 2 separate books called Parvati Mangal and it's called Sita Mangal. So he wrote that separate. So he wrote that. Satika now we learn. Now this one we knew, and that is also very, very, very good. It's called Hanuman Bahuk. And this in Hanuman Tale, Hanuman Bahuk it's a beautiful poem by Tulsidas ji. It's a little bit difficult than Hanuman Chalisa. Rag is also difficult. It's a little longer than Hanuman Chalisa also. So most important thing in Hanuman Bahuk is that it says that Tulsidas ji was having a lot of pain in his late age before he left this mortal world, and on his hand there was a lot of pain, and he wrote this book, this prayer to Hanumanji in Hanuman Bahuk, and he asked, and say this is only devotees can do it, and the devotee like Tulsidas ji, he actually challenged Hanumanji, and he said, now I have this pain, and I'm calling you for quite some time, and you're not coming. So is it that it's my turn came, meaning it's my turn that I'm suffering, it's my turn came, and is it that time you become old? He said to Hanumanji, can you become old now that you are not able to come and help me? You know, so it is enormous his bhav, and he says, I don't see you difference between Ram and Krishna, because he used to be a Ram,
Bhakta. So when he went to Vrindavan, he's looking for Ram. So he said, it may be possible that Krishna is teaching me because I am always a Ram Bhakta. But he says to Hanumanji, I'm not a Ram Bhakta, I'm not a Krishna Bhakta. I see you in Ram and Krishna. જેમ તમે પૂતનાને મારી કૃષ્ણ ભગવાન એમ મારા દુઃખને મારી નાખો. તમે આવો અને અહીંયા અડી તમે એને મારો એ દુઃખને. That is what he says in so Anubhav Pauk is used for it. There is a severe physical illness, then Hanuman Pauk is the most important ilaj. That's what this is. So anyway, he wrote this thing, and Hanuman Sadika. So many things he has written. I only request, it may sound that I take 30 minutes and I always might be looking for this, captive audience. Not that. I'm telling you, what I have seen and what I'm seeing, and what we saw with these kids, 9 kids that came, I was awestruck. I mean, obviously it's a one class, but they came only for that. Mothers came, mothers sat in the back, kids only sat in the front. They absolutely followed, and there was one 7-year-old kid, Nikhil. I cannot believe that he would not. And why it worked is because when we have even their home also, that Telugu family that I'm talking, their daughter is just about precise age. So, because I think I introduced, what's her name? Arnavi. So, even in their home, when we had a Sunderkand on Arnavi's birthday, Samanyu, their son is Samanyu. In Telugu, Samanyu means today is the Shravan Mas, so I'll just say this anyway. Samanyu means Shankar. So he was born on Shivratri, so they named him Shankar, Samanyu in Telugu. So he was on their home. Samanyu was like 5, 6, 7 years old. When we started Sunderkand at their home 2 years ago, first time, this little kid sat like this on the first 20 minutes like this. Literally, 20 minutes like this. He would not, parents may have said, look, you don't know, because A is a Telugu, B is a very young, 7, 9, 8 years old, so you don't know, just sit like this. Today we have prayer, this birthday, we have to pray and we have to say, and he asked how long? Well, until uncle finished, then that's too long, right? So he sat like this. You know what happened? And I'm not blaming anybody, I don't naming any. It's Arnavi's birthday, so they invite other friends, right? The kids come, so all kids come. So kids, other people said, he's sitting. There are a few other kids came. They're making noise, so what parents would say, go play upstairs. So few went upstairs. Finally, someone went upstairs. And obviously what parents do. Because of this Pathshala, Samanyu, Arnavi, Nikhil, Maya, Nikhil's sister Maya, I forgot. There is another girl. I forgot her name. Sorry. So, and I might be forgetting a couple online. So they sat and they did it. So there is some way of hope that somebody will take forward, read these things and chant, because this is something. This is true wealth. This is all other things will find. If somebody has $10 million, not everybody is Bill Gates and Warren Buffett, that they're gonna donate. Some of them are like Ambani's because they're just gonna do show off, right? So, but people, so it's okay to give your kids $10 million. You have nothing wrong in it. You work hard and it's fine. But why not to give this also? So. Anyway, Namaste astu Bhagavan Vishveshwaraya Devaya Trayambakaya Tripurantakaya Trikalagni Kalagni Rudraya Neelakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha. Shri Ganeshaya Namaha. शिवजी ना सूत तमे स्वामी सुधारा सुख करो दुख हरो देव
सुंदरा स्वामी सुंदरा सुख करो दुख हरो देव जुंडारा देव जुंडारा प्रथम पूजन प्रभु करिए तुम्हारा सुख करो दुख हरो देव जुंडारा देव जुंडारा तमे सेवक ना संकट ने कापो दिल खोलीने हो मांग्यो आपो तमे सेवक ना संकट ने कापो दिल खोलीने हो मांग्यो आपो सुनी अंतर नो साध सुनी अंतर नो साध मेहर कर जो महाराज मेहर कर जो महाराज सदा बरसाओ बिंदु पर प्रेम धारा सुख करो दुख हरो देव जुंडारा देव जुंडारा शिव जी ना सूत तमे स्वामी सुंदरा स्वामी सुंदरा सुख करो दुख हरो देव जुंडारा देव जुंडारा तमे माता पार्वती ना प्यारा सो सिद्धि विनायक दयाळा तमे माता पार्वती ना प्यारा सो सिद्धि विनायक दयाळा गळे फुलडानी माळ गळे फुलडानी माळ जमो मोदक ना थाळ जमो मोदक ना थाळ रोज नारद शारद गाय गुण तुम्हारा सुख करो दुख हरो देव जुंडारा देव जुंडारा शिवजी ना सूत तमे स्वामी सुंदरा स्वामी सुंदरा सुख करो दुख हरो देव जुंडारा देव जुंडारा श्री गजानन महाराज की जय वर्णानामर्थ संधाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको रक्ष पक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भववार्णवात् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसस्त्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदायिनी भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति आइए हनुमत प्रभु विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरु पधारिए पवन कुमार। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदयागार बसहि चा राम सर चाप धर
बलि बांधत प्रभु बारहु सो तन बन्नी न जाई उभय धरी महदेवी सात प्रदर्शिन धाई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी अंगद कर जाऊं मैं पारा संतर कछु कीर्ति बारा रामवंश कर तुम सब लायक पठई अखिल सबरी कर नायक कई ऋषपति सुनु हनुमाना चुप साधि रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतारा सुनतई भयो पर्वताकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरन कर राजा सिंह नाद करि बारहि मारा लीलय नादौ जल निधि धारा सहित सहाय रावण ही मारी मानहु त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछे तो ही उचित सिखावन दीजो मोही इतना करहु तात तुम जाई सीतहि देखि कहु तुझे आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना सेन संसंदारी निश्चर राम सीतहियारी है त्रैलोक पावन सुजत सुर मुनि नार रानी बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पावन मधुकर दास तुलसी सावई कौवे सज रघुनाथ जसु सुनहि जनर अरुणारी कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिपुरारी नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जातु नाम रटक मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अधीर बिहारी श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि जामवंत के बचन सुहाए हनुमंत हृदय रति भाए सब लगी मोहि पर खेव तुम भाई हरि दुख कंद मूल फल खाए जब लगी आवो सीतहि देखी कोई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन कहु माता कलयु हरति गिर रवि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक बोधि चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी करके उपवन तनय बल भारी जय गिरि चरण जय हनुमंता कलयु सुखा पाताल तुरंता जिमिया मोग रघुपति कर बाना देवी माती चले हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत विचारी ते मैं ना कहो विषमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन्हे विनु मोहि कहा विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरता नाम अहिन कर माता कही नाई कही तेरी माता आज सुरन मोहि दीन हारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिर मैं आवो सीता कही सुनि प्रभु विसुनाओ तब तब
ते नहीं जाना दिन मोहि करे अनुमाना जो जन भई ते बदन पसारा तनु कीन दुगुन विस्तारा सोरह जो जन मुख ते धयऊ पवन सुत बत्तीस भयो जस जस सुरता बदन बढ़ावा सासु धूम कपि रूप दिखावा जस जो जन ते आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा बदन पै पुनि बाहर आवा मागा विधाता तिरुनावा मोहि तुरन जेहि लागी पठावा गल मर मुतार में पावा राम काज सब करी हऊ तुम बल बुद्धि निदान आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अधीर बिहारी निश्चर एक सिंधु मारई करि माया नभ के सग गई जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल विलोक तिनके परिचाई गई छासक सोन उड़ाई हे विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीना सासु कपट कपि तुर तरि दीना ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिज बार गयो मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा कुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए सगमृग वृंद देखि मन भाए शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे उमान कछु कपि कह अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालय खाई गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी करि न जाई अति दुर्ग विचेती अति उतंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नादना चौहाट हट सुबाट भीति चार फुल बहु विधि बना गजमाग खच्चर निकर परिचर रस बरूतन सोगने बहुरूप निश्चर जूत विमल सैन वर्णत नहीं बने बन बाग उपवन माड़ी कासर खूप वापी सोहरी नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहरी कौमार देह विशाल कर समान अति बल गर्जही नाना कारण बिदरी बहुविधि एक एकन दर्जहि करि जगन बर कोडिन बिगड़ तन नगर चौबीस रचही कई महिष मानुष देनु कलर कलर निशाचर बाचहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सरती रथ सजीवन व्याधि गति पही सही पुर रखवारे देखी बहु कभी मन कीन विचार अखिल गुरु पदरो निसी नगर करो पैसार मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी मस्तक समान रूप कपिधरी लंक चले सुवीर नरहरि नाम लंकिनी एक निश्चरी लोका चलति मोहि निंदरी जाने नहीं मरू सर मोरा मोरा हार जहाँ लगी चोरा मुनि का एक महाकपि हानि रुधिर बहत धरणी डरवाने मुनि संपारी उड़ी सोलंका जोरी पानी कर विनय प्रशंसा जब रावण ही ब्रह्म पर दीना जगत विरंचि कहा मोहि कीना विकल हो सितय कवि के मारे तब जाने सुनित जल संसारे सात मोर अति पुण्य बहुता एक नयन राम कर दूता सात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुलायक अंग तुलन तारी सकल मिली जो सुकल सत्संग मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी प्रभु नगर की जय सब ताजा रगड़ राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल चलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करि मितवा जाहि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना ऐसा नगर तुम्हारी भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा देखे जाता अगणित जोगा गयौ दशानन मंदिर माही अति विचित्र करि जात सुनाहि शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर मौन दीप गए देहि भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर कह भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई नव
मन महु तरत करे कपिलागा तेरी समय विभीषण जागा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम ते सुमिरन तीन्हा हरस कपि सज्जन कीन्हा ऐसन हरि करहु परेशानी साधु होई न कारज हानि विप्र रूप धरि बचन सुहाए सुनत विभीषण उदित आए कैस नाम पूजी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़भागे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरि गुण राम मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिन दस नहीं महु दीप बिचारी तात कबहु मोहि जानी अनाथा हरि हरि कृपा भानुकुल नाथा राम सतन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भरत हनुमंता हरि कृपा मिलै नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह कीना जो तुम मोहि तरस दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति तरहि सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा अस्मै अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमेरी गुण भरे विलोचन नीर मंगल पवन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी जानत हूँ अस स्वामी विसारी हितकारी न होई दुखारी ए विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्वाच विश्रामा पुनि सब कथा विभीषण कही जे विधि जनक सुता तहरहि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता एकी जपो जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत पिता कराई कई सोई रूप गयो पुनि सहवा वन अशोक सीता रह जावा देखी मन ही महु कीन प्रणामा जय विधिरात निति जामा कृत तनु शीस जटा एक बैनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम सुखी बा पवन सुत देखि जानकी दीना मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी तरु पल्लव मौरा लुकाई करई विचार करो का भाई तेहि अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खलति कही समुझावा राम दान भय भेद दिखावा कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरि करहु पन मोरा एक बार विलोक मम होरा तृण दरियोड़ कहति बैदेही सुमिरि अवधपति परम सनेहि सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा सब मुनि जननी करई विकासा असमन समझु कहती जानकी फल सुधि नहीं रघुवीर बानकी सत सुने हरियाने ही मोही अधमनि लज्ज लाज नहीं तोही आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान परुष वचन सुनि काढ़ी अति बोला दिख सियारा मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी सीता धर्मं कृत अपमाना कटियो तव सिर कठिन कृपाना नाहित सपदि मानु मम बानी तुमके होति न जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सब दस कंकर ओ भुज कंठ की तवासी घोरा सुनु सट अस प्रवान बन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसि बरदारा तव पीता हरि मम दुख भारा सुनत बचन पुनि मारन लावा तनिया कहि नीति बुझावा कैसी सकल निशि चरनि बोलाई सीतै बहु विधि त्रास उजाई मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मार भिखारी कृपाना भवन गयो जस कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद सीतै त्रास दिखावहि
बहुमंद मंगल भवन अमंगलहारी रवहुत दशरथ अजिर बिहारी त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनो बोली सुनाए थे सपना तैसे करो हित अपना सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी हरारूढ़ नगर दस सीता मुंडित शिर खंडित भुज बीसा एक दिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई या सपना में कहो पुकारी होरी सत्य गए निचारी सासु वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण न पाई जत गई सकल तब सीता कर्मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच मंगल भवन अमंगलहारी रवहुत दशरथ अजिर बिहारी त्रिजटा सन बोली कर जोरी मासु विपति संगीते मोरी सजो देह करु बेदी उपाई सब बिरहु अब नहीं सही जाई आनि काढ़ रच सीता बनाई मातु अनलपुरी देवी लगाई सत्य करणी मम प्रीति सयानी तूने कुशवन सूर समवानी सुनत बचन पद गई समझाए सी प्रभु प्रताप बल तुझ सुनाए सी नितिनानन मिल सुन सुकुमारी अस करि तो निज भवन सिधारे कह सीता विधि बा प्रतिकूला मिलई न पावक विजय न भूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनियावत एक अवतारा पावक मय ससी श्रवतन आगी मानव मोहि जानि रत भागी सुनई बिनय मम बिरप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका नूतन किसल अनल समाना देहि अगिनि जनि करहि विधाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कठिन कलत समगीता अति करी हृदय विचार दीनि मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठि कर गयो मंगल पवन अमंगलहारी रवहुत दशरथ अजिर बिहारी सब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीत को सकैया जय रघुराई माया ते अति रति नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना सुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण भरने लागा तै सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि मुझे सब कथा सुनाई श्रवणामृत जय कथा सुहाई कई तो प्रकट होति किनु भाई सब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो रामदूत मैं मात जानती सत्य तपस करुणा निधान की यह मुद्रिका मात में आनी दीनी राम तुम कर सैतानी नर बानर ही संग कहो कैसे कई कथा वही संगति जैसे कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जन मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास मंगल भवन अमंगलहारी रवहुत दशरथ अजिर बिहारी हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजन नयन पुलकावली बाड़ी बोलत बिरह जलधि हनुमाना भयउ तात मोह कौ जल जाना अब कहो कुशल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कवि के हेतु धरी निठुराई सहज वाणी सेवक सुखदायक कबहु किसुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता होई गई गिरि श्याम मृदु गाता वचन न आव नयन भर बारी अमरनाथ हो निपट विसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुखि दुखी सुख पान केता जन जननी मानहु जियऊना सुनते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर अस कई कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर मंगल भवन अमंगलहारी रवहुत दशरथ अजिर बिहारी कहु राम वियोग तव सीता मोहु सकल भय विपरीता नवतरु किसलय मनहु कृसानो काल निशाच मनिषित विमानो कुबलय विपिन कुंत बन सरिता वारिधि तपत तेज जनु बरिसा जेहि करहे करते वीरा सुरत स्वार्थ समत विद समीरा कहु ते कछु दुख करी होई काहि कहो यम जानन कोई सत्व प्रेम कर ममारु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत सोई पाई जान प्रीति रतु इतनई
माही प्रभु संदेश सुनत बदेही मगन प्रेम तन तुझी नहीं देही कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरि राम सेवक सुख दाता उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजौ कजराई निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानो जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी रघुबीर होति सुति पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि हुए जानकी तम करो सुखम जातु धान की अवहि मात मैं जाऊ नवाई प्रभु आय सुनई राम तुम्हारी कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिल सहित आय रघुबीरा निशिचर मारी तो हिल गई जीवपुर नार दारी जस गई हे सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान भट भट बलवाना मोरे हृदय प्रभु संदेहा सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल वीर कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप दे गरुड़ई खाई परम लघु ब्याल मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलशानी आशीष दीहि राम प्रिय जाना ओहु तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक सोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भय देव मगन हनुमाना बार बार नायस पद सीता बोला बचन जोई कर सीता अकृत कृत्य भयउ मैं माता आशीष तव मोद पीछाता सुनो मात मोहि अति सह भूखा लागी देहि सुंदर फल रूखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभग रजनी जर भारी तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानव मन माही देखि बुद्धि बल निपुण कपि करो जानकी जाऊ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी चले उनाई सिर पैते उबागा पलकाए कर तोरे लागा रहे तहाँ बहु बड़ रखवारे कछु मारे कछु जाई पुकारे नाथी एक आवा कपि भारी तेय लोक बाटी गाँव जारी खाए सी फल अरु पीड़प उपारे रक्षक मर्दी मर्दी मरि डारे श्री रावण पड़े बड़ नाना मेरी देख कर गिर हनुमाना सब रजनी जर कपि संगारे गए पुकार कछु तुम्हारे पुनि पड़यउ कई अच्छ कुमारा चला संग ले सुबट अपारा आवत देखि बिड़प गई करजा सारी निपाति महासुनि गर्जा कछु मारे से कछु मरते सी कछु मिलिए सी धरी दूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सुनि सुत बदलं केसरी साना कदैच मेघनाथ बलवाना मारसी जन सुत बांधे सुताही देखिए कपि कहाँ कर आई चला इंद्रजित अतुलित योद्धा बंधु निधन तुरी उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण बड़ आवा कटकटाई कर जाय धावा अति विशाल तरु एक उपारा कीन लंकेश कुमारा रहे महाबड़ता के संगा दे कपि मर्दई निज अंगा इनै निपाति ताई सन बाजा गिरे जुगल मानव गज राजा मुड़िका मारी चढ़ा तरु जाई ताई एक जन मूर्छा आई उड़ी बहोरी की निशिव माया नीति न जाय प्रपंच न जाया ब्रह्मा अस्त्र ते सांधा कपि मन के न विचार जो न ब्रह्म तर मानो महिमा विजय अपार मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी ब्रह्म बाण कपि कौते मारा करते उबार वटक संहारा तै देखा कपि मूर्छित भयहु नाग पास मार ले गयो जासु नाम जपि सुनहु भवानी पवन कनक मढ़ई नर ज्ञानी तासु दूत के बंद तरु आवा प्रभु कारज लगी कपि बनावा कपि बंधन सुनि निशिचर दाए कौतुक लादि सभा सब आए दस मुख सभा निकि कपि जाई कहीं न जाय कछु अति प्रभु जाय कर जोरे सुर दिसित विनीता विकट बिलोकत सकल प्रभीता देखि प्रतापन कपि मन शंका जिनिय जन्मौ गरुड़ असंका कपि बिलोकि दसानन बीसा कई दुर्बाद सुध बुध सुरते कीन पुनि उपजा हृदय विषाद
अजिर बिहारी कहलंके सकवंते कीसा के बल घाले मन गीता के देव कवंतु नहीं मोही के वसियत सकत कोई मारे निश्चर के अपराधा औकत तेल प्राण कई बारा सुरावल ब्रह्मांड निकाया आई जात बल पेचित माया जाके बल बिरंती हरीसा भारत सुत भारत दस तीसा जा बल सीस दरत सहसानन अंत कोट समेत गिरिकान दरे जो विविधे सुरत्राता उमते सगन सिखावन गाता हर को दंड कड़ी जय बंजा के समेत नृप धर्मद गंजा हर दूषण त्रिशिरा अरुबाली बदे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेस तेज देव चराचर धारी सासु दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नारी मंगल भवन मंगल हारी जब मुझ दशरथ अजिर बिहारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सब भाव सन परी लड़ाई समर बाली सन करी जसु पावा कपि बचन बियत बियरावा खायो फल प्रभु लागी भूखा किंतु भावते तोड़े उनका सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार गदामी जिन मोई मारा ते मैं मारे पर बांधे उतरे तुम्हारे मोई न कछु बांधे कैलाजा नित प्रभु कर काजा किनति करौ जोरी कर रावण सुनौ मान तलि मोर सिखावन देखौ तुम निज कुल ही बिचारी नंदि बजो भक्त भयहारी जाके डरति काल डराई जो सुर सुर चराचर खाई सासो बरु कबौ नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारी मंगल भवन मंगल हारी जब मुझ दशरथ अजिर बिहारी रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करो विजिपुल सजसु बिमल मयंका एक दिनौ जनि हो कलंका राम नाम बिन गिरान सोहा एक विचारी त्यागी मत मोहा बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित पर नारी राम विमुख संपति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई सजल मूल गिन सरितन नाही वर्ष गए पुनित बन सुखाई सुन दस कंटक उपन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज सोही सकई न राखी राम कर दोही मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागौ तम अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मंगल भवन मंगल हारी जब दशरथ अजिर बिहारी जरद कही कपि अधीत बानी भगति विवेक विरत नहीं सानी बोला बिहसी महाभिमानी विलाप मई कपि दुर्बल ज्ञानी मृत्यु निगड़ आई खल तोही लागे सियदम सिकावन मोही उल्टा होई का हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना सुन कपि बचन बहुत किसियाना देगी न हरऊ मूढ़ कर प्राण सुनत निशाचर मारन दाए सजीवन कई विभीषण आए नाई शीस करि विनय बहुता नीति विरोधन मारी अदूता आन दंड कजु करिए गुसाई सबई कहा मंच बल भाई सुनत बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग करि बढ़ई अवंतर कवि के ममता पूछ पर सबई कौ समुझाई तेल बोई पटमानी मुनि पावक देव लगाई मंगल भवन मंगल हारी जब दशरथ अजिर बिहारी पुंछहीन बानरता जाई तब तक निज नाते लई आई जिनके कीन सी बहुत बड़ाई देखौ मैं तिनके प्रभुताई वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई शरण सारण में जाना जासु धान सुनि रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना रहान नगर में संद्रुत तेला पाड़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कहाए पुरवासी मारे चरण करई बहु हासी बाजई रोल दे सब तारी नगर पेरी पुनि कुछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता निरुच चढ़े कपि कनक अटारी भई सवेतनी साचर नारी हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़वाई जरई नगर भालो बिहारा कपट लपट बहु कोटि कराला तात मात हा सुनिय पुकारा एहि अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कभी नहीं होई वानर रूप
अनल जेहि सिरिजा चरण सो तेहि कारण गिरिजा उलटी पलटी लंका सब जारी पुनि परा पुनि सिंधु मझारी पूछ बुझाई खोई श्रम धैल गुरु पगोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतारी सब दयऊ हर्ष समेत पवन सुतलयऊ कहे तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरुद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी 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 तात सक्र सुत कथा सुनायहु पान प्रताप प्रभु ही समझाएहु मास दिवस महुनाथन आवा सो भूमि मोहि जियत नहीं पावा कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा तुम तात कहत अब जाना तोहि देखि शीतली भई छाती पुनि मोहु सोई दिनु सो राति जनक सुतै समझाई करी बहु विधि धीरज दीन चरण कमल सिरु नाई कपि कवन नाम पंकीन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी चलत महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ त्रवै सुनि नित चरणारी नादि सिंधु एहि पार ही आवा तपत किल किला कपिल सुनावा हर्षे सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिल तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीर्ति रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पावति विभारी चले हरषि रघुनायक पासा पूछत कवत नवल इतिहासा सब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल पाए रखवारे जब गर्जन लागे मोति प्रहार हरत तब भागे जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि कहि आए प्रभु काज मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जौन होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहि न खाई ए विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा आई सबनी नावा पद सीता मिले सबन अति के कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा काज विशेषी नाथ काज कीने हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा तुम सुग्रीव बहुते मिलऊ कपिन सहित रघुपति कहि चलेहु राम कपिन जब आवत देखा ये काज मन हर्ष
हर्ष विशेषा परिकसिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाए प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज पूजी कुशल नाम तव कुशल भेटी पद कंज मंगल भवन अमंगल हारी जाओ तो दशरथ अधीर बिहारी जामवंत कर सुनु रघुराया जा पर नाथ करो सुमदाया ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुरनर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर सासु सुजत त्रैलोक उजागर प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सफल आजू नाथ पवन सुत के निज करनी तव तव मुख न जाय सो बरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति बाए पुनि हनुमान हर जिनि लाए कहु तात के भांति जानकी राति करति रक्षा सो प्राण की नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाय सोई दीनी नाथ जुगल लोचन बरि बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी केहि अपराध नाथ हो जागे अवगुण एक मोर मैं माना विचुरत प्राण रखीन पयाना नाथ तो नैनन को अपराधा विचुरत प्राण करई हति बाधा विरह अग्नि तनु तूल समीरा स्वात जरई चन माहि शरीरा नैन स्रवै जल निज हित लागी जरई न पावते विरहागे सीता कहयति विपति विशाला विनय कहे बल दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समपीति बेगी चलिए प्रभुवानिय मुझ फल फल दल दीति मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अधीर बिहारी सुनि सीता दुख प्रभु सुखैना हरि आए जल राजीव नैना बचन काय मन मंगति जाई सपने बुद्धि विपत्ति की ताई का हनुमान कपिपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन वचन न होई किसी बात प्रभु जातु धान की रिपुई दीनियानि भी जानकी सुनु कपि सोई समान उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी प्रति उपकार करो का तोरा सनमुख होई न सकत मन मोरा सुनि सुत तोई उरिन मैं नाई देखे करि विचार मन मानी पुनि पुनि कपि हिचितौ सुर जाता लोचन नीर पुलक अति गाता सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत चरण प्रभु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी बार बार प्रभु जाई उड़ावा प्रेम मगन से उठपन भावा प्रभु कर पंकज कवि के सीसा सुमिरि सुरंग गण मौलिका सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कान कथा अति सुंदर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका कोई विधि दहे दुर्ग अति पंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना शाखा मूल के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई नाभि से दुहाड़क पुर जारा निश्चर गणपति विपिन उचारा तो समताओ प्रताप रघुराई नाटन कछु मोरी प्रभुताई ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल सो प्रभाव परमान लही जारि सकई कलकूल मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदशरथ अधीर बिहारी नाथ भगति अति सुखदायनी देव कृपा करि न पावनी सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी एवमस्तु तब करो भवानी उमा राम सुभाव जय जाना हरि भजन तनि पावन आना यह संवाद जातु रावा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुनि प्रभु वचन कहई कपि वृंदा जय 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 गोपाल सुखकंता अब रघुपति कपिपति बोलावा कहाँ चले कर करहु पनावा अब विलंब के ही कारण कीजे तुरत कपिन कहु आय सुनीजे कहु सुख देखि सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुरहर्षि कपिपति बेगी बोलाए आये झूठ बजूट नाना वरण अतुल बल बानर भानु बलूत मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम राम जय सो दशरथ अधीर बिहारी श्री राम राम प्रभु पद पंकज नावहि सीता श्री राम राम बर जहि वायु महाबल सीता श्री राम राम देखी
करही श्री राम राम चित्कर ही दिग्गज डोल महीगिरी लोल सागर खर बर मनोहर सुतपतन सर्व सुर मुनि नाग किन्नर जुगटै गड़गड़ ही मरकट बिगड़ बड़बहु कोड़ी कोड़ी न गावही जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावै कर सकना भारा उदार पति बार बार ही मोहई गगन पुनि पुनि कमंड पुष्ट कठोर जोगी सोवै रघुवीर रुचिर प्रदान प्रस्थिति जानी पव सुहावनी जग कमंड सर्पर सर्पराज तुलसी नाम जल पावनी है विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जाना लागे कान पल भानु विपुल कपिवीर मंगल भवन अमंगल हारी नमो सुदशरथ अजिर बिहारी ओहानि साचर राय सशंका जगते जारी गयो कपिलंका निज निज सूत करई विचारा निश्चर कुल के रमारा सासु धूत बल करनी न जाई देयाए पुर कवन बुलाई सूतिन सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक गुलानी रति झोरी कर पति पग लागी बोली वचन रीरग पागी कंत कर सहर सन परिहरो मोर कहा अति नहीं अदरो समुझत जासु धूत कह करनी सवई गर्भ रजनी चरनी सासु नारी निसचिव बोलाई पटवौ कंठ दुचहु मलाई सब कुल कमल विचित दुखदाई सीता सीत दिशा समाई सुनौ नाथ सीता बिनु दीन्हे किसन कुमार संभोज कीने राम बाण इधर सरिस निकर निशाचर बेक जगत जगत तब लगी जतन करौ तन टेक मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्रवण सुनी सड़का कर बानी सीता जगत विदत अभिमानी सबई सुभाव तारी कर साचा मंगल मोह मन अति काचा जो आवई मर कड़ काई ये विचारे निशाचर खाई सबई लोक पजाकी चासा सासु नारद वित परिहासा अस्कै नियति ताहि उरलाई कलियुग सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंठ पर विधि विपरीता बैठे सभा खबरिय सिपाही सिंधु पार से ना घबराई पूजे सचिवा उचित मत कहो ते सब हसे मत कर राहो जिते सुरासुर सब श्रम नाही नरवानर के लेखे माही सचिव बैठ गुरु दीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म कर दीन कर होई बेगही नाथ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सोई रावण को बनी सहाई स्तुति करई सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा प्राता चरण शीस ते नावा सिर नाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मोहि गाता मति अनुरूप कहो हित दाता जो पंचा है कल्याणा सुजस सुमति प्रपगति सुख नाना सो पर नारी लाल गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई सुन सागर नागर नर जो अलप लोभ बल बलहीन तोहु काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच सब परि करि रघुबीरहि भजौ पदै जय संत मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालौ कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अधिक अनादि अनंता मोदिजनेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तरुधारी जनरंजन भंजन खल व्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता ताहि बयरु तजिनारिय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा देहुनाथ कपि कहु बैदेही भजौ राम बिनु हेतु सनेही शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगति लागा दासु नाम त्रय तापन चावन सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण बार बार पद लागो विनय करहु दस शीस
परिहरिमान मोहमद भजऊ कौशलाधीश मुनिपुलस्त निज तेज सदा करि पठरी पाठ तुरत तो रघुतन कही पारितु अवसर मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मानवंत अति सचिव सयाना सुगत सुनि अति सुखमाना साधारण नीति विभूषण तोर धरुन कांत विभीषण रिपुत कर्षकात सरदो भूरि न करहु याय को मानवंत गृह कयउ महोरी कोई विभीषण पुनि कर चोरी सुमति कुमति सब केउ रही नाथ पुराण निगम सकाई जहाँ कुमति ता संपत्ति नाना जहाँ कुमति ता विपति निदाना सौर कुमति बसी विपरीता विचारित मानव रिपुप्रीता काल राशि निशिचर कुल केली देव सीता पर प्रीति घनेरी सात चरण गहिर मांगो राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहू ऐसन होई तुम्हारा मंगल भवन अमंगलहारी तब दशरथ अजिर बिहारी उद पुराण श्रुति सम्मत बानी करी विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन उठारी साई कल तोय निकट मृत्यु अवनाई जियसि सदा सठ मोर जियावा कर पक्ष मूल तोय पावा कौसिन खलस को जग माई उज्जवल जाई सीता मैं नाई मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति सत मिल जाई तिनहि को नीति अस कई कीन्हे चरण प्रहारा अनुज कहे पद बारहि पारा उमा संत की कियहि बड़ाई मंद करत जो करहि भलाई तुम पितु सरि सबले मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा सचिव संग लई नव पथ गयो सबई सुनाई कहत रस भयो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि कोई मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम चरणं मम प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम चरणं मम अस कहि चला विभीषण जबहि श्री राम चरणं मम आयुहीन भय तब तबहि श्री राम चरणं मम साधु अवज्ञा तुरत भवानी श्री राम चरणं मम कर कल्याण अखिल के हानि श्री राम चरणं मम रावण जबहि विभीषण जागा श्री राम चरणं मम भयउ विभव बिन सबहि अभागा श्री राम चरणं मम चलेउ हरति रघुनायक पाहि श्री राम चरणं मम भरत मनोरथ बहुमन माहि श्री राम चरणं मम देखियौ जाई चरण जल जाता श्री राम चरणं मम अरुण मृदुल सेवक सुखदाता श्री राम चरणं मम जय पद परसित ऋषि नारी श्री राम चरणं मम दंडक कानन पावन कारी श्री राम चरणं मम जय पद जनक सुताहुर लाए श्री राम चरणं मम कपट कुरंग संग धर लाए श्री राम चरणं मम हरौर सरस रोज पद जेहि श्री राम चरणं मम अहो भाग्य में तेरियौ तेहि श्री राम चरणं मम जिन पायल के पादुकनी भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलोकियो नयन बजाई मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम चरणं मम प्रभु दशरथ अजिर बिहारी श्री राम चरणं मम एहि सरस प्रेम विचारा श्री राम चरणं मम आयो सबरि सेवहि पारा श्री राम चरणं मम कपिन विभीषण आवत देखा श्री राम चरणं मम जाना कोरि पुतूत विशेषा श्री राम चरणं मम ताहि राधिका पित पहि आए श्री राम चरणं मम सब
श्रीरामा शरणं मम पद शरणागत भयहारी श्रीरामा शरणं मम सुनि प्रभु वचन हरत हनुमाना श्रीरामा शरणं मम शरणागत वत्सल भगवाना श्रीरामा शरणं मम शरणागत कौ जेत जयी निजन हित हनुमानी तेनर पावर पापमय तिनै विलोक कहानी मंगल भवन मंगलहारी श्रीरामा शरणं मम प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्रीरामा शरणं मम कोटि विप्र बदला गई जाहू आए जनक तजो नहीं जाहू सन्मुख होई जीव मोहि कबही जन्म कोटि रगना गई कबही पाप वर्त कर सहज सुबाहु वचन मोर तेरी भावन काहू जो पर दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट तल तीक्ष्ण न भावा भेद लेन पढ़वा दस सीता कबो न कछु भय हानि कपीसा जगमौ सखानी साचर जेते लक्ष्मण हानि निमिष महु जेते जो सबीत आवा सरनाई रति अवताई प्राण की नाई उभय भांति तेहि आन हो हस्त कृपा निकेत जय कृपाल कई कपी चले अंगद हनु समेत मंगल भवन मंगल हारी कबो सुदशरथ अजिर बिहारी सादर ते आगे करी बानर जय जहाँ रघुपति करुणा कर तूने से देखे दो दाता नंद दान के दाता बहुरी राम छवि राम विलोकी कपीत कछु फल रोकी भुज प्रलंब कंचारुन लोचन श्यामल घात प्रणत भय मोचन सिंध कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता जय वीर कही मृदु गाता नाथ न जानन कर्म भ्राता निश्चर बंध जन्म दुर्दाता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा लोकहि तम पर नेहा श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन बहुवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी अस कई करत दंडवत देखा सुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा अनुज सहित मिली डिग बैठारी बोले वचन भगत भयहारी बहुलंकेश सहित परिवारा सब मुखावर वास तुम्हारा फल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निभई के भांति मैं जानहु तुम्हारी सब रीति अति नयन पुनर भाव नीति बरुबर भालन रख कर ताता मुक्त संग जनि तेरी विधाता अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम कीनी जानि जन दाया सब लगी कुशल न जीव कहू सपने हो मन विश्राम जब लगी भजन राम कहू शोक राम तजि कामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सबल गिरदय बसत्तर नाना लोभ मोह मत्सर मद माना जब लगी उड़न बसत रघुनाथा करे चाप सायक कटि भाषा ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलुक सुखकारी सब लगी बसती जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही अब मैं कुशल मिले भय मारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला मैं निशिचर अति अगम सुभाओ चरण कीन नहीं गाओ जासु रूप मुनि ध्यान न आवा हे प्रभु हरति हृदय मोहि लावा अहो भाग्य ममामित अति राम कृपा सुख पुण्य देखे नयन विरंज जीव दैव्य जुगल पद कंज मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनौ सखानी जताओ सुभाओ ज्ञान बुद्धि जम्बु गिरि जाओ जो नर होई चराचर सोई आवे तवय चरण तकि मोहि सजि मद मोह कबड़ चल नाना करौ सच ते साधु समाना जननि जनक बंधु सुतदारा अनुपम पवन सुरत परिवारा सबके ममता ताग बडोरी मम पद मनहि बांध बरि डोरी समदर सीता पछुनाई हर्ष शोक भय नहीं मन माहि अस सज्जन मम उर बस कैसे योगी हृदय बसई जम जैसे तुम तारी के संग प्रिय मोरे करौ देव नहीं आननि होरे सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके दिल पद प्रेम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनु लंकेश सकल गुण तोरे गाते तुम्हारी सर्वप्रिय मोरे राम भजन सुनि बानर जूठा सकल कहि जय कृपा बरूठा सुन कवि भीषण प्रभु के वाणी नहीं अगाध श्रवणामृत जानी अधम बुझ गई बारे बारा हृदय समातन प्रेम अपारा सुनौ गए सचराचर स्वामी कनक पालो अंतरयामी मूर्ख
सदाशिव मन भावनी एवमस्तु कै प्रभुरन धीरा मागा तुरत सिंधु कर नीरा जगति सखा तव इच्छा नाही मोर दर्श अमोक जग माई अस कही राम तिलक कही सारा मन वृष्टि नभ भई अपारा रावण क्रोध अनल निजय श्वास समीर प्रचंड जगत विभीषण राखियो दीन्यु राजमखंड जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए समाज सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ मंगल भवन अमंगलहारी रमवत दशरथ अजिर बिहारी अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना तेनर पद्मिन पूत पिशाना निज जन जानी ताहि अपनावा प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा पुनि सर्वज्ञ सुर बासी सर्वरूप सब रहित उदासी बोले बचन नीति प्रतिपाल कारण मनुज तनुज कुल बालक सुर कपीस लंकापति वीरा देवी तरु जग गंभीरा संकुल मकर उरग जस जाति अति अघात तु सर्ग भाति कालं केस सुनौ रघुनायक कोटि सिंधु तोषक तव सायक जगति तदपि नीति रसि गाई विनय करे सागर सन जाई प्रभु तुम्हार कुल गुण जल्दी कई उपाय विचारी बिनु प्रयास सागर करई सकल भानु कपिधारी मंगल भवन अमंगलहारी रमवत दशरथ अजिर बिहारी सखा कही तुम की उपाई करिय देव जो होई सहाई मंत्र गया लखि मन मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा नाथ दैव कर तव भरोसा सोचिय सिंधु करे मन रोसा कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैव आरती पुकारा सुरत बिहति बोले रघुबीरा ऐसे ही सर्व धर्म मन धीरा अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई बैठे पुनितर दर्प जताए जब ही विभीषण प्रभु कही आए आके रावण धूत पटाए सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सरारी शरणागत पर नेहा मंगल भवन अमंगलहारी रमवत दशरथ अजिर बिहारी सगड़ बखानई राम सुबाऊ अच्युत प्रेम का वितरि लाऊ जिसके दूत कपिल तब जाने सकल बांध कपिस परिहाने सुग्रीव सुनौ सब माने अंग भंग करि पड़ो निश्चर सुनि सुग्रीव बचन कपिलाए मानिकटक चौपात पिराए बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकारत तद बिन जागे जो हमार हर नासा खाना सैनि कौशला जिसके आना सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागी अति तुरंत छुड़ाए रावण कर दिजहु यह पाती लक्ष्मण बचन बाज कुल घाती करे मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता देहि मिलौन आवा काल तुम्हार मंगल भवन अमंगलहारी रमवत दशरथ अजिर बिहारी सुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत पर रघुकुल गाथा कहत राम जस लंका आए रावण चरण तीर्थ तिरनाए जाति किसान न पूछी माता अवति न सुख आपनि कुशलाता पुनि कहु खबरि विभीषण तेरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी करक राज लंका सर त्यागी होई जल कर कीट अभागी पुनि कहु भालु कीट कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु विचारा कहु तपस्वी के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी सी भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर कमनि नरि उदर तेज बल बहुत चकित चित तोर मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम राम जवानु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम राम नाथ कृपा करि पूजे जैसे श्री राम राम मारहु कहा क्रोध तजि कैसे श्री राम राम
जामवंत बलरासी मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम राम प्रवस दशरथ अधीर बिहारी श्री राम राम एक सब सुग्रीव समाना श्री राम राम इन सम कोटिन गणैक दाना श्री राम 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 कृपा अतुलित बल तिनहि समान त्रैलोक गणै अस्मै सुनात्रवन दस कंदर पद्म अठारह सूत पवंदर नाथ कटक महशोक पिनाहि श्री राम राम मोर तुम्हें दी शरण माही श्री राम राम परम क्रोध विजयी सब हाथा आय सुपैन तेहि रघुनाथा पूजहि सिंधु सहित जस डाला पूरहि नत बलि सुंदर विशाला मर्दि गर्त मिल वही जस सीसा ऐसहि बचन कहै सब कीसा गर्जहि तर्जहि सहज अशंका श्री राम राम मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका श्री राम राम सहज सूर कपि बाल सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहू सीत सकल संग्राम मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम राम प्रवस दशरथ अधीर बिहारी श्री राम 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 तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस्र सत सकहि न गाई सर एक सोचि सत सागर करि पूजे उदय नाग सासु बचन सुनि सागर पाई नागत पंथ कृपा मन माही सुनत बचन बिहसा दस सीसा तो अति मति सहाय सुत कीसा सहज बीरु कर बचन दृढ़ाई सागर तन ठानी मचलाई मूढ़ वृषाका कर सिबराई श्री राम राम विभु बल बुद्धि थाह मैं पाई श्री राम राम सचिव सभी विभीषण जाके जय विभूति कहा जग साके सुनि खल बचन धूत सवारी समय विचारी पथिका काढ़ी रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाए जुड़ावहु साथी प्रियति बाम कर लीनी रावण श्री राम राम सचिव बोली सकलाग बचावन श्री राम राम आदर मन हिरि जाय सकल बनि गारति तुलसीस राम विरोधन उपरति शरण विष्णु अजैत सीत जिमान अनुज इव बहुपद पंकज ब्रह्म होई कि राम सरानन फलफुल सहित पतंग मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम राम प्रभु दशरथ अधीर बिहारी श्री राम राम सुनत सभय मन मुख मुस्काई कवच दसानन सबहि सुनाई भूमि पराकर भवत आकाशा रघुतापस कर भाग विलासा कौतुक नाथ साच्य सब वाणी समुझहु ठाढ़ी प्रकृति अभिमानी सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा श्री राम राम नाथ राम सन तजहु विरोधा श्री राम राम अति कोमल रघुवीर सुबाहु यद्यपि अखिल लोक करराहु मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई पुर अपराध न एकहु धरई जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे जब ते ही कहा तेन बैठे ही श्री राम राम शरण प्रहार कीन सहते ही श्री राम राम नाई चरण सिर चला सोतहा कृपा सिंधु रघुनायक जाहा कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनि गति पाई विजय गर्त की ताप भवानी राचत भयउ रहा मुनि ज्ञानी बंदी राम पद बारहि बारा श्री राम राम मुनि निज आश्रम कहु पगधारा श्री राम राम विनय नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुतो दशरथ अजिर बिहारी लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोभार दिविद्रिक कृशानु सच सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रस सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज परे फल जथा हास कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने हो प्रभु बिसिख कराला ऊटी उदधि उर अंतर ज्वाला मकर उरग जश गण अकुलाने जल जंतु जल निधि जब जाने कनक थार बरी मणि गणनाना प्ररूप आयऊ तजिमाना काटे पै कदरी भरई कोरि जतन को सींच विनय मानक के ससु डाटे पैनवनी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुतो दशरथ अजिर बिहारी सब सिंधु गई प्रभु पद केरे नाथ सब गुण भरे गगन समीर अनल जल धरनी सब प्रेमित माया उपजाए सब ग्रंथ निकाये प्रभु आयस जय काज साई सोते भांति रहे सुख लाई प्रभु पद कीन मोहि सिख दीनी मर जाता पुनि तुम्हारी कीनी ढोल गवार सुप्रभु नारी सकल तारना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाम सुखाई उतरई कट गुण मोहि बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेश सिधाई करो तुम्हें निज तुम्हारी तुम्हारी सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई वे विधि उतरे कभी कटकू तात चोको पाई मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय हनुमान गरौ सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय हनुमान नाथ नील नर कपि भाई जय सिया राम जय जय हनुमान नरकाई ऋषि आशिष पाई जय सिया राम जय जय हनुमान जिनके परस्ती गिरि भारे जय सिया राम जय जय हनुमान करई जलति प्रताप तुम्हारे जय सिया राम जय जय हनुमान मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई जय सिया राम जय जय हनुमान करय बल अनुमान सहाई जय सिया राम जय जय हनुमान एक विधि नाथ पयोनि बंधाइए जय सिया राम जय जय हनुमान जय सुजस लोकि हुकाइए जय सिया राम जय जय हनुमान ईश्वर मम उत्तर तटवासी जय सिया राम जय जय हनुमान हतौ नाथ खल नर अघरासी जय सिया राम जय जय हनुमान सुनि सुपाल सागर मन पीरा जय सिया राम जय जय हनुमान
जय जय हनुमान कामद धन दारिद दवारी के जय सिया राम जय जय हनुमान मंत्र महामणि विष जाल के जय सिया राम जय जय हनुमान लेखत कठिन कुअंक भाल के जय सिया राम जय जय हनुमान प्रति विवाह के विधि श्रुति वाली जय सिया राम जय जय हनुमान महामुनिन सो सब करवाई जय सिया राम जय जय हनुमान जय गिरीश कुश कन्या पानी जय सिया राम जय जय हनुमान भवहि समर्पी जानी भवानी जय सिया राम जय जय हनुमान पानी ग्रहण जब कीन महेशा जय सिया राम जय जय हनुमान प्रिय हर्षे तब सकल सुरेशा जय सिया राम जय जय हनुमान हर गिर जाकर भयो बिराहु जय सिया राम जय जय हनुमान सकल भुवन भरी रहाउ जाहु जय सिया राम जय जय हनुमान वेद मंत्र मुनि पढ़ो सरई जय सिया राम जय जय हनुमान जय 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 शंकर सुर करही जय सिया राम जय जय हनुमान बाजहि बाजन विविध विधाना जय सिया राम जय जय हनुमान सुमन वृष्टि नव भई विधिनाना जय सिया राम जय जय हनुमान राम नाम कर अमित प्रभावा जय सिया राम जय जय हनुमान वेद पुराण उपनिषद गावा जय सिया राम जय जय हनुमान सिया राम मैं सब जग जानी जय सिया राम जय जय हनुमान करहु प्रणाम जोरी जुग पानी जय सिया राम जय जय हनुमान सुनि शुभ कथा उमा हर्षाली जय सिया राम जय जय हनुमान बोली अति विनीत मृदुवानी जय सिया राम जय जय हनुमान धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान सुनेउ राम गुण भव भयहारी जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय हनुमान उमा सहित जेहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय हनुमान भवौ सो दशरथ अधीर बिहारी जय सिया राम जय जय हनुमान निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायउ चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायहु सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना करि सकल आस भरोस कावहि सुनहि संतत सठ मना तहि सकल आस भरोस सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कवि कलुष विध्वंसने पंचम सोपान सुंदरकांड श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। बधाई जाओ भाई चलो बदन के चलो Come on, Chopra, let's go. 10-5 મિનિટ હા ના પણ બધામાં અચ્છા આપણે લઈશું હા હા ફર્સ્ટ ના ફ્લેટ હનુમાન रुद्रांश ઉપરના હનુમાન પોકેટમાં છે ઉપરના pocket. અચ્છા બેટા બોલો ઉપરના pocket. હનુમાન ચાલીસા બોલો હનુમાન ચાલીસા હા વાંધો નહીં બોલે અચ્છા ઓકે ઓકે સારું કાકીને પૂછ્યો કાકીને વાત કર બેટા
અદ્ભુત. બહુ જ સરસ. જેમ જેમ આનું રિકરિંગ આપણે કરીએ છીએ ને એમ એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ થતું જાય છે ને સમય ક્યાં જતો રહે છે એ ખ્યાલ નથી આવતો. પહેલા આપણે આવી રીતે સુંદરકાંડ પૂછનના ત્યાં ભાઈના ત્યાં મારા ત્યાં બી કરતા હતા ને તો હું આમ જોતો હતો, પણ હવે ઇવન ભાઈના ત્યાં ને એવી રીતે તો જ્યારે તમે લોકો એકદમ સ્લોલી તમે ગાતા હો છો ને ત્યારે આઈ એમ એબલ ટુ જોઈન વિથ યુ ગાઈસ. પણ this is beautiful. હનુમાન ચાલીસા. ચલો છોકરાઓ હનુમાન ચાલીસા. આ રહ્યો બેટા, આ રહ્યો. ક્યાં ક્યાં બેઠો? કેટલા દિવસ આવે છે? દેવાંશ, દેવાંશ આવે છે? દેવાંશ
हनुमत तेरी सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई दुख नंदी महासुख होई जो यह करे हनुमान चालीसा होय सिद्धिसा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ जय महादेवा पवन कनक संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसो सुदशरथ अजिर बिहारी पवन सुकाज कपिन जग माने जो नहीं होई तात तुम पाए कौन सो संकट मोर गरितो जो तुमसे नहीं जात है पार बेरियरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। So this is the book I passed is Ram Raksha Stotra. It's a short sloka in Sanskrit. The book has English translation also in Sanskrit obviously. It's a short Sanskrit sloka created by Buddha Kaushik Rishi. So Vishwamitra Rishi, and it was given by Lord Shiva to Buddha Kaushik Rishi in his swapna, and it says in the book. So you will be able to follow the translation. So because of the Shravan Mas, and we said after the Sunderkand we do Ramayana. So this covered the Ramayana also. It's a very short prayer. It's one of the most auspicious prayer. It gives the strength, and it literally asks the protection for the entire body. It says, Sirome Patu, so you protect my head, protect my eyes, everything. It says, and what it is that if you recite this thing with your family, the family unity grows very strong. That is what it says. So with that, this is our extended family. And on this auspicious occasion of your birthday, and all the best to Slok for his upcoming SAT in couple weeks, right? Yeah. So with that, best wishes. We pray this wonderful prayer, and then we'll do that. One second. વેદા માટે So everybody can listen, follow along in the mind, and then sort of meditate. I have plenty. So you're perfect. Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Ram Raksha Stotra Mantrasya Buddha Kaushika Rishihi Shri Sita Ramachandro Devata Anustup Chandra Sita Shaktihi Shri Man Hanuman Kirakam Shri Ramachandra Prityate Ram Raksha Stotra Jape Viniyoga Jayeda Janubahu Lutasarajanasham Padma Padmasanastam Pītam Vaso Vasanam Navakamalagala Spardinetram Prasannam Vāmaṅkārūra Sītā Mukakamalila Lucanam Nīradhāvam Nānālaṅkāra Diptam Dadarmarujata Mandalam Ramachandram Charitam Raghunathasya Shatakauti Pravistaram Ekaikamaksharam Punsam Mahāpātakanāshanam Dhyātvānīlokpalakshyāmam Rāmam Rājīvalochanam Janaki Lakshmanopetam Jatamukutamanitam Sāsītonadamulvanam Pādim Naktam Chirantakam Svalīlaya Jagatkrāto Bhavirbhutam Jamim Rama Raksha Pate Pragna Papagnim Sarvakamta Shiro Me Raghava Patu Balam Dasrathatmaja
कौशल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियस्तुति ग्रहणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दित स्कन्दो दिव्यायुधो पातु भुजो अग्नेशकारुकं करो सीतापति पातुं हृदयं जातुयज्ञजित् मध्यं पातु करत्वंसे नाभिर्जम्बवदाश्रय कटे पातु शक्तिनि हनुमत् प्रभु ऊरुरगुत्तमं पातु रक्षक कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमकान्तक पादो विभीषणश्रीत पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पटे सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भजे न द्रष्टुमपि न शक्तास्ते रक्षित रामनामपि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्मुक्तिर्मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेण मन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहतात् सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामर तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः अभिरामस्त्रिलोकानां रामश्रीमान् सनः प्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलासिनो नाथो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तेस्तो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतान्नो रघुत्तमः रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतपति सदैव गच्छतां सन्नतकवची खड्गी चापबाणो धरो युवा गच्छन् मनोरथस्य रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्त वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति संश्रया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्तु नाम निर्दैवेन ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणानवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनतात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदा
गर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामे रामयता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मातरम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीमुद्गलकौशिकमुनिविरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु वायुपुत्रो महाबल समिष्ट फाल्गुन सखा गाक्षौमितविक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः सायंकाले प्रभाते च यात्राकाले च यः पठेत् न च विघ्नः भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीरामचन्द्रप्रोक्तम् एकमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रं श्रीहनुमानलीलादासः शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु just 30 seconds sir. That'll be good. So that Maruf Chale Unchas was 25th dua. Yeah, 25th dua. So because of the Shravan Mas, we cannot chant the entire Rudram. So Somvare, on Monday, we will be doing the Rudrabhishek at our home. Because it's weekdays, 6 p.m. So we will put a live stream. So this entire Vedic Rudram, I'm not chanting the entire here, just one Anuvad, but entire Rudram, Suddha Uchchar, we will be chanting. So that is the Rudram you chant to offer the Abhishekam to Lord Shiva. So if you join, you can do it because we'll be doing Abhishek. So you can follow along in that way. Once the Rudram is done, we'll chant the Chamakam. So that is the prayer to Lord Shiva, asking for all auspicious desire to be fulfilled. So that will be chanted, and then we will chant Bilva Astotar Sata Stotra. So we will offer 108 Bilva Patra. Again, it's in all Sanskrit with the Suddha Uchchar, no shortcuts. So we will chant that. You can offer 108 Bilva Patra if you have at home, or you can offer Akshat in place of Choka, in place of Bilva Patra, or at least you can do the Namaskar on your own home. If you have a Shivling, you can offer, you can join 6 p.m. I'll send the link. Tomorrow I'll finalize, so I'll send the link 6 p.m. So Monday is the second Monday of the Shravan. So we'll do this one on one. So this Rudram is 11 chapters. And one more thing before I forget, by God's grace, immense grace, just before this Shravan started, Meenakshi Mandir did a Maharudram last week, Friday, Saturday. So obviously they've been doing it for a long time. We were blessed to be part of that, and we were there Friday. 11 times we chanted 22 chapters. 11 times. So but the next day we chanted Vijay also, and then ultimately we did a yagna also, and then so it went on like temple's time is generally 8:30, went on until 9:15, 9:30 on Friday. But everybody showed up on 9 a.m. in the next day, and there were about 40 to 50 ritviks. So it went awesome event. There is no words to describe. So by God's grace, there is a sankalpa. There is they call it Siva sankalpa. Siva meaning kalyan. So it's a kalyan, auspicious sankalpa. It's a desire. Man proposes, God disposes, right? So we think about it, God decides.
So there is a Shiva Sankalpa to do Ati Rudram. So this to chant 1440 times this Rudram. So 22 chapters will be chanted 1440. And it's a huge undertaking. It doesn't happen in North America. It's happen only 2 or 3 places in North America. One in California, Liverpool, a temple, and maybe another temple somewhere in Northeast. Hawaii temple. Huh? Okay, Ohio temple. Sorry, yeah, Northeast. Yeah. So Ohio temple. So it's a very rare opportunity. It will take 1 week. And there will be hundreds of priests and ritviks. The ritviks is the one who has learned this how to chant. It has to be chanted properly. So there will be hundreds of ritviks would come. It will be more than almost $1 million budget to host that many people. It will be 1 week. This will be chanting, and then that many yagnas has to be offered. You cannot just chant and be done with it. So that is so. This Ganesh, during the Ganesh Utsav, we have a committee. We are discussing to plan it out. Once that finalized, obviously I will reach out to every one of you, and I humbly request that during that time, obviously, if not everybody can take week off, but even if you take few days or the weekend or the Falashruti, so we'll be chanting the 1 chapter of the Falashruti also. So it is going to be probably once in a lifetime event in Meenakshi Temple. Wow. Once in a lifetime. In Meenakshi Temple, we have done it. Personally, we have done it. We did 1,000 Sahasralinga Archana. So we did 1,008 lingam. We prepared ling from Suddha, Pavitra Mati that you get from various banks of the various Pavitra river. And then you put a Ganga Jal, and then you make 1,008 lingam in the morning 4 a.m. And then you chant this Rudram for 11 times. So we did, by Bhagwan's grace, we did it 1 time in Meenakshi Mandir, 1 time we did it at our home, and 1 time we did it in Gujarat, exactly 2-3 days after Tejas and Shivan's Yagnapuri. શિવ શક્તિમાં પણ થઈ ગયું. પેલું 1000 તો છે ને, પાર્થેશ્વર. પાર્થેશ્વર? 1000 પાર્થેશ્વર. 1008 પાર્થેશ્વર. So it is a absolutely auspicious and amazing thing. So probably this is a once in a lifetime, the Ati Rudra. So once we know, we'll let you know. I mean, it's just so many things we are saying so quickly. 24th, so 25th is Sunday. 25th Sunday we are doing 108 Yamnastak Parayan at our home. So after a long time, by Yamna Maharani's grace, it is happening, and the Param Vaishnava has helped us, so everybody will come. And during that time, it so coincidentally happened, there's Dayaji's Dadiba, Dayaji's grandmother's Lord Krishna, Laddu Gopal they call, they Bal Krishna, her seva, that she never leaves her home if she goes to journey in America. She used to come in America in 70s, 60s, and then she would go in India and take a bath from the Gomutra. So she was that staunch. So that Krishna is coming to our home. Then her uncle, family's Krishna is coming to our home, and then her voice Krishna is coming to our home during that Yamuna Maharani part on 25th Sunday, August. And then a day later is when is it? Tuesday is the 26th, the 27th is a Janmashtami. So we're doing Krishna Mahotsav with Laddu Gopal. Laddu Gopal. Dayaji's grandmother's seva. So that is a 3 paddies seva. Today we are blessed. So Krishna is coming for that Janmashtami. So yeah, just 30 seconds. Okay. અમારા બધા છોકરાઓને યમનાષ્ટક આવડે છે. મને આઈ નો પેલી આપણે તમારી જગ્યાએ ગાયેલું મને ખબર છે ને એટલે જ મેં કીધું તમને જોઈને મેં ખાસ કીધું. સો હા ગુજરાતને બધાને મોડે આવડે છે. So if they Sunday છે, if they can come, so they can do the first, they can do it,
or the last, whichever that time that works for you. Is that okay? Perfectly fine. They themselves is a what do you call Kumarika to Mataji no Saksat Swarup. So if they can come, that would be the best thing. And they can check one. See one thing, don't get me wrong, young kids. I'm not saying that you spend 8 hours and do these things. Okay? What I'm saying is that don't leave these things. I'll give you one example. Go and Google. If I say anything unfactual, challenge me next time. But Google, this is what I'm going to say. Google. There's a kid from India. A kid from India got admission in Stanford. South Indian kid. The Stanford is not easy to get in, okay? Yeah. But still a lot of people gets in. Whoever gets in, he gets in, right? He got in Stanford. He's coming from India. He made a condition with Stanford that he's a vegetarian. So Stanford said, no big deal. We have a cafeteria vegetarian. No. I'm a strict vegetarian. Where I stay in the dormitory, next door to me cannot be a meat eater. He put a condition to Stanford, and Stanford accepted it. Go and check in the Google. Wow. They accepted and said yes. And he is wearing dhoti in Stanford. Go and check. Yes. So I'm not saying you do these things. Yeah, obviously I'm not doing it. I'm not wearing dhoti at my work. What I'm saying is, do as much as you can. So they know the Yamnastak. That is fabulous. That is absolutely fabulous. So yeah, if they can come, that would be the greatest thing. And it would be our blessings. If they come and chant the first or the last, whatever. We're not asking them to stay 100. If they can stay, that's their choice. Okay. He gave an interview to Rajiv Malhotra. So if you can search, you will search that way. Interview with Rajiv Malhotra for I forgot his name, a Stanford student, and you will see he wear the vibhuti and all these things. So you will see that, and obviously he's a smart kid. Not so much. Okay. Take the Ganta. શ્લોકને તમે જસ્ટ અને જ્યારે ગાઉં ને તો પછી હું મારી તરફ વાત રાખજો, હું કહીશ ત્યારે તમે બંધ કરી દેજો, પણ હમણાં હું કહું ત્યારે ચાલુ કરજો. કહું ત્યારે ચાલુ. કૃભ્યો નમઃ હરિ ઓમ હરિ ઓમ. नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे च नमो हन्त्रे च हरिभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवे च मयोभवे नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तित्याय च कुप्याय च प्याय च प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आतार्याय चालाख्याय च नमः सस्क्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाख्याय च. This is the one of the chapter in Rudram. Reason to ring the bell. In this chapter, the Namah Shivaya mantra is given in this chapter. So you do the 700-800 names of Lord Shiva, then you get to know Namah Shivaya. It is not like given in the YouTube in old days, that you put a YouTube 108 times and it's done. No, it was not given. This is how it was given, the mantra diksha. That you memorize the Rudram, that's how you memorize the Namah Shivaya. That's why we did the Ganta. Now the blessing, auspicious blessing for everyone and the entire family. No. संच मे मयश्च मे प्रियंच मे नु कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे यशश्च मे भद्रश्च मे द्रविणंच मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे द्युतिश्च विश्वंच मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातंच मे सुश्च मे प्रसुश्च मे सीरंच मे लयश्च मे नामयश्च मे यक्ष मे यक्षं च मे नाम यश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे शुभं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदीनं च मे.
ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. Now we do that. હા પ્રસાદ કોણ નાખો? પ્રસાદ ખોલી દો. હું એ પૂછતી હતી કે એકચ્યુઅલી આજે બનાવ્યું છે પણ હવે કાઢવાનું કંઈ કહું હતું જો કરો તમે લેવા દેવો. ચાલશે ચલો ખાંડ મૂકી દઈશ ઓકે ચાલો. ડિમ્પલ ખાલી જળ નહીં બને. હા એને કોઈ પણ લઈ ઠીક કરે ઠીક કરે. તો હવે પાછું મૂકી દઉં. ધારો કે ત્યાં હશે ચાંદીનો ચાંદીનો છે. ગ્લાસ ચાંદીનો છે ને એમાં છે ડિમ્પલ. એ બધા આમાં બી હશે પેલા કબાટમાં. હા એમાં ચાંદીનો હશે. પરફેક્ટ તમારે લાવવા દેવો? તો બધા બાલકૃષ્ણ છે. ગો ગો ગલ ગાઓ મેરે બાબા, रुचि रुचि गो गल गाओ मेरे बाबा, ऐसा गो गल गाओ मेरे बाबा, सब अमृत में जाए मेरे बाबा, के जल पियो मेरे बाबा, पान विराग प्रवास रे बाबा, कोई किस भोग तो पावे, सो तेरा बन जाए मेरे बाबा, भक्तों की अरजी सुनो मेरे बाबा, दो कर दो दास मेरे बाबा, आओ भोग लगाओ मेरे बाबा. બેઠા બેઠા કરશો વાંધો નથી. તમારું બટન ઊભા થઈને કે? તો પછી ઊભા થાઓ. ઊભા ઊભા. હા બધાને અને આ જે રામરક્ષા સ્તોત્રની બુક્સ છે ને, those who wants to keep it, that's perfectly fine. That's perfectly okay. તમે આપી છે Not like છે આપણી I know એમની પાસે છે, એમની પાસે other kids and other family members. આમાંથી હા હું ગાડી કાઢું ગાડી કાઢું કદાચ છૂટી બસ બનાવી ભાભી એમ ડિમ્પલ એમ મેં બધી વસ્તુ આપીને easy પડે. વડી તો આવે ને. યસ એમાં મારી રાહ જોઈએ છે હવે એ લોકો ઊભા થઈને કરે તો પછી બધા ઊભા થઈ જાવ ને, કારણ કે સ્લીપરી છે હા રાગે સ્લીપરી પ્રોપર્ટી જો लक्ष्मण मूर्तित पड़े सवारे आदि सजीवन
नारायणी रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा दुर्जल मारे दाहिने भुजा संत जनकारे नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन तारक फूला साई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती श्री राम जी की कीरति कलित ललित सिर प्रीति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु शारद धरणि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावो शास्त्र सब संतन घोरस मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंत सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संसद शंभु भवानी आरत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभूषण गरुड़ के भी आरती श्री रामायण जी की कलिमल वरनि विषय रस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति शुभ नीति चलन रोग भव मुनि अमीति सात मास सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी काकपूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकी कान्तस्मरणं जय जय राम राम सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकी कान्तस्मरणं जय जय राम राम सद्गुरुनाथ महाराज की जय जी करोमि यज्ञस्य सकलं परस्मै ते समर्पयामि बर्थडे बॉय ने आपको
શ્લોકની પણ 19મી બધા એટલે મને બહુ બેસ્ટ લાગે આની બી આમ જ તમારી તુલસી જયંતીમાં જુઓ છો મમ્મી ના